In today's video, I will share the story of a young boy who was born in poverty but then reframed कि उन्होंने अपनी life और अपनी हर situation to build this business called Starbucks that has 32,000 stores worldwide and makes a revenue of $25 billion a year. हावर्ड शुल्ट्ज का जन्म 1953 1953 में हुआ था। एक बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुए थे वो। पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। उनके माँ बाप ने कहा कि पढ़ाई करो, पढ़ाई से ही लाइफ चेंज हो सकती है। एंड देन वंस ही ग्रेजुएटेड ही टुक वेरियस जॉब्स, फर्स्ट एट जेरोक्स एंड देन एक स्वीडिश कंपनी में ही took a job. And he saw that there was this company in the US, Starbucks, that ordered a lot of coffee vending machines. वो उसमें इंटरेस्टेड हुए। उन्होंने देखा जाके कि ये तो एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है। Starbucks could be a phenomenal thing. बट जब उन्होंने अपने वहाँ जो फाउंडर्स थे उस कंपनी के उनको कहा कि मुझे आप हायर कर लो, तो उन्होंने अग्री नहीं किया। Howard continued and persisted for 1 year till they finally gave in and hired him as a marketing and sales manager. हावर्ड ने अगले कुछ सालों में ये रिव्यू किया कि जो कॉफी का बिजनेस उस कंपनी का तब था, which was sell those roasted beans, वो एक सही मॉडल नहीं था। And he saw that it had potential of becoming a big market. जिस टाइम हावर्ड ने ज्वाइन किया तब स्टारबक्स के सिर्फ वर्ल्ड वाइड 3 स्टोर्स थे, but he made sure that he would expand that. उन्होंने फाउंडर्स को समझाया कि ये आइडिया अच्छा है और ऐसे वर्क करना चाहिए हमें, but the founders did not agree because they wanted the business to be in their own way and in their own sense. Finally, Starbucks से क्विट किया हावर्ड शुल्ट्ज ने। उन्होंने अपनी एक कॉफी कंपनी स्टार्ट करी जिसमें उन्होंने रेवेन्यू बनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने ये कोशिश करी कि वो एक दिन स्टारबक्स को उसके फाउंडर से खरीद लेंगे। And finally, that day came when he bought Starbucks from its founders at a rate of $3.8 million. काफी एक यूनिक स्टोरी है जिसमें आप ये सीख सकते हैं कि how he persisted, he did not give up. He had a dream, he knew what he wanted to achieve, and he made sure that even if he had to quit Starbucks, go out, then earn the money, raise the money, and then come back and buy it. वो कहते हैं जब उन्होंने अपनी कॉफी कंपनी शुरू करी थी, he met 242 people to invest in his company. And out of that 242, 217 actually declined. It's quite a unique story कि 217 rejections के बाद आप कैसा feel करेंगे? Will you be willing to get up again and get going? It's a phenomenal story where any amount of no's, any amount of rejections did not deter Howard from building Starbucks to where it is. आज $25 billion के annual revenue और 32,000 stores across the world, and Starbucks is one of the most phenomenal examples of a coffee story done right. The question for you is like, what can you learn from this story? How can you be so passionate about a cause in your life? How can you be so crazy about a passion in your life that you would give up anything and everything to come back and to make sure that that happens? ये आपके हाथ में है अल्टीमेटली कि लाइफ के जो कर्व बॉल्स हैं, लाइफ के जो लेमन्स हैं, इनको आप कैसे डील करते हैं और उनको आप कैसे कन्वर्ट करते हैं टू योर स्ट्रेंथ, एंड कैसे आप अपने ड्रीम को पूरा करते हैं थ्रू एफर्ट, थ्रू परसिस्टेंस एंड थ्रू हार्ड वर्क. So I know ये stories हमें बहुत inspire करती हैं and we can learn a lot from these stories. But ultimately, who do you want to be? Do you want to stay who you are right now and be okay with life? Or do you want to go get it and make sure कि आप इन stories से सीख के आगे बढ़ें और life में वो चीज़ achieve करें जो probably आपकी life के लिए लिखी है? I know they can also seem too good to be true, but ये stories हमें याद दिलाती हैं कि वो normal human beings हैं जो पैदा हुए थे एक difficult condition में, but they transform their life. They transform the life of millions across the world by sheer determination and never give up attitude. अगर ये story आपको पसंद आई तो like this video, share it with others, and IgnitedNeurons on a mission to touch 1 billion lives positively. आपका एक like, एक share, एक subscribe हमारे मिशन में हमारा साथ देता है. So why don't you click on that bell icon and subscribe to this channel?